हेलो फ्रेंड्स, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक्सरे ओटी लैब टेक्नीशियन तथा स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है, जिसमें स्टाफ नर्स की 50 वैकेंसीज है और सैलरी 52,533 रुपये। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की वैकेंसी 6 है, सैलरी 49,484 रुपये। लैब टेक्नीशियन की 8 हैं, जिसमें सैलरी 49,484 रुपये तथा ओटी टेक्नीशियन की 12 वैकेंसी है, सैलरी 49,484 रुपये हैं। इसमें इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोम नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफ और ग्रेड सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अंडर द नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड नर्स अंडर नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एंड पोस्ट qualification experience of at least 5 years from an ABH accredited hospital or minimum 200 beds worked either on regular contract at outsource basis in any national health scheme hospital under health family welfare GNCTD in any super specialty autonomous hospital organization such as ONGC, HRL, BEL, etc. or equivalent or nursing officer. Bachelor in Nursing Science or post-basis nursing courses recognized institute under the Nursing Council of India, registered nurse under Nursing Council of India and post-qualification experience of at least 2 years from NAB accredited hospital on minimum 200 beds worked either on regular contract outsource basis in any national health scheme hospital under health family welfare GNCTD in any super specialty autonomous hospital organization such as ONGC, HL, VEL, etc. or equivalent nursing officer. एज लिमिट है 50 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन टू SC ST OBC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट SMPH etc अकॉर्डिंग्स विद द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओटी टेक्नीशियन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन अच्छा सेकेंड 10+2 विथ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स CSSD कोर्स परफ्यूनिस्ट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन 5 year एक्सपीरियंस इन अ रेलिवेंट फील्ड मेंशन बिलो ऑपरेशन थिएटर CTVS परफ्यूनिस्ट न्यूरो सर्जरी गैस्ट्रो सर्जरी CSSD एनेस्थीसिया गैस प्लांट एनेस्थीसिया वर्कशॉप ICU सर्जिकल रिसेक्शन और BSc from recognized university 2 year experience in a relevant field mentioned below operation theatre including operation theatre CTS neuro surgery gastro surgery CSSD for anesthesia anesthesia workshop ICU surgical resection experience experience of NABL asserted labs or NABH asserted hospital of minimum 200 beds working either on regular contract outsource in national health scheme hospital under health family welfare GNCTD in any super specialty autonomous hospital organization such as ONGC HL WEL etc equivalent shall only be considered age 50 ईयर एज रिलेक्शन SC ST OBC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेकेंडरी 10+2 साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट 2 year कोर्स इन रेडियोग्राफी और डिप्लोमा 2 year कोर्सेज इन रेडियोग्राफी और
radiological technology 2 years from a recognized board. Post qualification experience of at least 5 years as a radiographer. BSc radiography radiological technology and post qualification experience at least 2 years as a radiographer. Experience of NABL asserted labs, NABH asserted hospital, minimum 200 beds, working either on regular contract outsourced basis in any national health scheme hospital under Health Family Welfare GNCT, any super specialty autonomous hospital organizations such as ONGC, HHL, WELL, etc. equivalents and we considered 50 years as relaxation. SC, OBC department candidate example in accordance with the instruction order issued by Government of India from time to time. Technician, lab technician, educational qualification, matriculation as a secondary with science diploma MLT from a recognized institution. Post qualification 5-year experience as a lab assistant in a relevant group of laboratories as mentioned below: biochemistry, endocrine or metabolic lab, dialysis lab, except Australia antigen units, gastroenterology lab, surgical and medical lab, pathology, clinical pathology, blood bank, anatomy, forensic medicine, microbiology and serology, immunology, parasitology, physiology, pharmacology, animal house allergy, clinical tissue collaboration, experience of NABL asserted labs or NABH asserted hospital of minimum 200 beds, working either on regular contract outsource basis in any national health scheme hospital under Health Family Welfare GNCTD, in any super specialty autonomous hospital organizations such as ONGC, HLL, WELL, etc. of equivalent shall only be considered. Age limit 50 year, age relaxation SC, ST, OBC departmental candidate example etc. accordance with instruction order issued by Government of India post duty from time to time. तो फ्रेंड्स, और अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट www.gshs.in पे जा कर के देख लें.